Hello, dear students. I am Mrs. R. Anand and welcome to the English class of Standard 10th. Today we are going to study Unit 2.2, The Boy Who Broke the Bank, Part 2, written by Ruskin Bond. Story till now. Nathu is a sweeper boy who works with People Nagar Bank, owned by Seth Govindram. He is not happy with the job because he has not received his salary till the 20th of this month. He tells this to his friend Sitaram, the washerman's son, who assures him to find a job that might suit him. While delivering clothes, he speaks about the matter to Mrs. Srivastava, who in turn tells her friend Mrs. Bhushan that Seth Govindram's bank couldn't pay its employees as the sweeper boy who works there hasn't received his wages for over a month. The story continues. Shocking, remarked Mrs. Bhushan. If they can't pay the sweeper, they must be in a bad way. None of the others could be getting paid either. दोनों जब बात कर रहे हैं तो मिसेस भूषण कह रही हैं शॉकिंग. शॉकिंग मीन्स ये तो चौंकाने वाली बात है. दिस मीन्स अगर वो अपने स्वीपर बॉय को नहीं पे कर सक रहे मतलब वो बहुत ही बुरी स्थिति में है. और एंड शी इज़ क्वाइट श्योर दैट नन ऑफ द अदर्स, कोई भी कर्मचारी को वहाँ पर पेमेंट नहीं मिल रही होंगी. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband, who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. Now, after the conversation with Mrs. Srivastava, she went ahead to search her husband. Now, where was her husband? Her husband was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop. And what was he doing? He was nicely talking to the owner. So, there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? What a liar she is. She has been nicely sitting and talking with Mrs. Srivastava under the tamarind tree, and here coming to her husband she is saying that she has been looking for him for almost an hour. कह रही है 1 घंटे से मैं आपको ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए थे. Nowhere, replied Mr. Bhushan. Had you remained stationary in one shop, I might have found you. But you go from one shop to another, like a bee in a flower garden. मिस्टर भूषण गुस्सा होकर बोल रहे, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ. तुम ही हो जो एक दुकान से दूसरी दुकान जाती हो. लाइक अ बी. बी मीन्स मधुमक्खी, जो फ्लावर के गार्डन में एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती है. उस तरीके से तुम भी एक दुकान से दूसरी दुकान जाती रहती हो. Don't start grumbling. The heat is trying enough. I don't know what's happening to People Nagar. Even the bank's about to go bankrupt. What she said to her husband, don't start grumbling, मतलब complain मत करो, तुम भी बड़बड़ मत करो, पहले ही गर्मी कम है. And she said, पता नहीं क्या हो रहा है पीपल नगर में, अब बैंक भी क्या हो रहा है, दिवालिया. bankrupt means दिवालिया हो रहा है, बैंक भी दिवालिया हो रहा है. What's that? said Kamal Kishore, sitting up suddenly. Which bank? Why, the People Nagar Bank, of course. I hear they are stopping paying employees. Don't tell me you have an account there, Mr. Kishore. वो कह रही है, जैसे ही मिस्टर किशोर ने सुना, कमल किशोर ने, वो कह रहा है कौन सा बैंक दिवालिया हो रहा है. मिसेस भूषण कहती हैं पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स. अब मैंने सुना है दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉय, सारे कर्मचारियों को उन्होंने सैलरी देना बंद कर दिया है. कह रही है कहीं तुम्हारा तो अकाउंट नहीं है उस बैंक में.
No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition of the keeper of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The People Nagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can. एंड वो कह रहा है नहीं मेरे तो पैसे नहीं हैं पर मेरे पड़ोसी के हैं, नेबर के हैं. एंड वो पड़ोस में आवाज़ दे के कह रहा है, जहाँ दोनों की दो दुकानों के बीच के पार्टीशन के ऊपर से कह रहा है, दीपचंद बुला रहा है, दीपचंद को बुला रहा है, तुमने लेटेस्ट खबर सुनी है? And he's telling that news to his neighbor Deepchand that People Nagar Bank is about to collapse. Collapse means डूब जाना, कि People Nagar Bank क्या होने वाला है? डूबने वाला है, और तुम जल्दी से जल्दी क्या करो, अपने पैसे वहाँ से निकाल लो. Deepchand was cutting the hair of an elderly gentleman, was startled that his hand shook, and he nicked his customer's right ear. The customer yelped with pain and distress. Pain because of the cut, and distress because of the awful news he had just heard. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant's store where there was a telephone. He dialed Seth Govindram's number. The Seth was not at home. Where was he then? Deepchand is a barber. Barber means nai. And what was he doing? He was cutting the hair of an elderly gentleman. एक बुजुर्ग इंसान के वो बाल काट रहे थे. जैसे उन्होंने सुना कि बैंक डूबने वाली है, वो startled. Startled means surprised, shocked. और इस तरीके से हिला वो कि उसके हाथ में जो कैंची थी उससे उसके कस्टमर का राइट ईयर, दाहिना कान थोड़ा सा कट गया. और जैसे ही कट लगी कान में कट लगा, द कस्टमर येल्प्ड विथ पेन, वो कस्टमर ज़ोर से चीखा दर्द के कारण. एंड डिस्ट्रेस मीन्स तकलीफ़ होना. सो ही वॉज इन पेन तकलीफ़ में भी था और विपत्ति में भी था. डिस्ट्रेस मीन्स विपत्ति ऑल्सो. पेन में इसलिए था क्योंकि उसका कान कटा, और विपत्ति इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी इतनी भयंकर न्यूज़ सुना है कि बैंक डूबने वाली है. एंड वो वैसे ही गॉट अप लाइक दैट ओनली विथ हिज नेक, वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन. एक साइड का उसका नेक पूरा बिना अनशेव किया हुआ, वैसे ही वो उठा, दौड़, ही स्पेड अक्रॉस, वो दौड़ते हुए दूसरे साइड गया जहाँ पे जनरल स्टोर था, जनरल मर्चेंट स्टोर था, वेयर देयर वाज अ टेलीफोन. और वहाँ जाके व्हाट वाज ही डूइंग? ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर. वहाँ जाके गोविंदराम को उसने डायरेक्ट फ़ोन लगाया. बट गोविंदराम वॉज नॉट एट होम. सो वेयर वॉज ही देन? वो कहाँ थे? द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber's shop and told Deepchand, "The bird has flown. Said Govindram has left town. Definitely it means a collapse." And then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. जैसे ही उसे पता चला सेठ गोविंदराम अपने घर पर नहीं है, तो सेठ गोविंदराम है कहाँ, थे कहाँ? ही वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर. वो कश्मीर में छुट्टियाँ बिता रहे थे. अब वो कह रहा है, ओ अब मेरी समझ में आया, मैं तो यकीन नहीं कर सकता, आई कांट बिलीव, आई डिड नॉट बिलीव इट. बट देन ही हरीड बैक, दौड़ के वापस आया वापस शॉप में. एंड ही सेइंग दैट द बर्ड हैज़ फ्लोन, चिड़िया उड़ चुकी है, क्योंकि सेठ गोविंदराम ने टाउन ऑलरेडी छोड़ दिया है. वो यहाँ से चले गए, वो यहाँ से भाग गए हैं. डेफिनेट क्यों चले गए, क्यों भाग गए? क्योंकि बैंक डूब गई है. डेफिनेटली बैंक डूब गई. एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप. वैसे ही वो तेज़ी के साथ निकले और जल्दी जल्दी कॉल करने लगे, डायरेक्ट लाइन पे कॉल करने लगे ऑफिस और अपने चेकबुक के लिए. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants, it travelled to the shop, circulated amongst the customers, and then spread with them in various directions.
to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. And this news that the bank is collapsed, or said Govindram has gone, he has left the town, ये न्यूज़ पूरे बाज़ार में फैल गई. कैसे फैली? विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. जैसे ही जंगल में आग फैलती है उस प्रकार से ये न्यूज़ फैल गई. कहाँ से निकली? जनरल मर्चेंट स्टोर से निकली. वो ट्रैवल करते करते सारे शॉप में गई ये न्यूज़. जितने शॉप में कस्टमर्स थे सबके पास. देन दैट न्यूज़ स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन. वेरियस जहाँ जहाँ ये कस्टमर्स गए होंगे सब अपनी न्यूज़ लेकर अलग अलग दिशा में फैल गए. अब ये पान वाले के पास न्यूज़ पहुँची, टेलर के पास, जो ठेले लेकर जाते हैं उनके पास, सोना चांदी काम करने वाले उनके पास, यहाँ तक कि बेगर भिखारी के पास भी, जो कहाँ बैठता था? पेवमेंट पे, सड़क के किनारे जो रास्ता चलने के लिए होता है वहाँ बैठता था, वहाँ तक ये न्यूज़ पहुँच गई. Old Ganpat, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years, calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. He had never been known to walk. When this news reached to beggars, one of them was Ganpat. He was an old person, he was a beggar, and he had a crooked leg. मतलब उसका पैर टेढ़ा था, वो चल नहीं पाता. और he had been squatting on the pavement. वो काफ़ी सालों से एक उस पेवमेंट पे डेरा जमाए रहता था, बैठा रहता था और भीख मांगता था. कॉलिंग फॉर आर्म्स. आर्म्स मीन्स भीख, भीख मांगता था. इन द इवनिंग, शाम को कोई तो भी गाड़ी लेकर आता था, उसको गाड़ी में बिठाता था और उसको लेके जाता था. सो पीपल हैड नेवर सीन हिम वॉकिंग. किसी को पता ही नहीं था कि वो चल भी सकता है. But now, on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 रुपीज़ इन सेविंग्स. लेकिन अब जब ये न्यूज़ आई कि बैंक कोलैप्स होने वाला है, गणपत ने सबको एस्टॉनिश मीन्स सरप्राइज. एवरीबडी गॉट सरप्राइज्ड. क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ कूद कर अपने पैरों पे खड़ा हुआ, पर दौड़ता हुआ पूरे स्पीड के साथ कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है? बैंक की तरफ. And soon everybody came to know that he had 1,000 rupees in saving. उसके हज़ारों रुपए कहाँ पर है? सेविंग में पड़े हैं बैंक में. Men stand in groups at street corners discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or drought, and the imminent crash of the People Nagar Bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. Men stood in groups. अब क्या हो गया? लोग खड़े हो गए ग्रुप्स बना के चौराहे पे, रास्ते पे. एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डिस्कसिंग द सिचुएशन. उन्हें कुछ तो बात करने का एक टॉपिक मिला. क्यों भाई? क्योंकि पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस. ऐसी स्थिति, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पीपल नगर में कम ही आई थी. सेल्डम मीन्स बहुत कम. कभी वहाँ पर बाढ़ नहीं आई, कभी अर्थक्वेक भूकंप नहीं आया, कभी ड्रॉथ सूखा नहीं पड़ा. पर ये जो घटना घटित होने वाली है, इमिनेंट क्रैश जो था, या जो कहते हैं कि बैंकरप्ट होना, इमिनेंट बैंकरप्सी ऑफ द पीपल नगर बैंक, ये घटना ने सबको बात करने के लिए मजबूर कर दिया. सब आ गए और सब बातें कर रहे हैं इसके बारे में. एंड एवरीबडी इज स्पेक्यूलेटिंग. हर कोई अपने अटकलें लगा रहा है कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, और हर कोई अपने गुस्से को जता रहा है. दे आर रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी. बड़े क्रोधित तरीके से अपने अपने विचार वो व्यक्त कर रहे हैं ग्रुप्स में आकर. So here we come to the end of this particular portion. In this particular portion we have come across many new words, and let us see their meanings. Stationary means stable, that is not moving.
Bankrupt means without enough money to pay what you owe financially or ruined. Nicked means cut slightly. Beeline is the direct route. Crooked means not straight. Squatting means occupying. Barrow means a cart. Cart means koi gadi. Drought means shortage of rain. Now, children, I am giving you an assignment in which the first question is guess the meanings of awful, seldom, rapidity of forest fire, and yelped. Question number 2 is write the answers of the following questions, in which the first question is which shop was just next to photography shop? Second, who did Deepchand call a bird? Third, who was Mr. Srivastav talking to? And fourth, who surprised everyone and how? So, dear children, I hope you have understood this taught portion well. Read the lesson, learn the new words and their meanings, solve the assignment in your register, and study. Thank you and God bless you.